Hello everyone, welcome to my channel Embrace Biota. In this lecture, we are going to discuss about different types of epithelial tissue. प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल एपिथेलियल को डिस्कस कर लिया है। आज हम एपिथेलियल के बाकी टाइप्स कंपाउंड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपाउंड एपिथेलियल। Compound epithelial is also known as stratified epithelial. हमने पढ़ा था कि सिंपल एपिथेलियल का रोल सिक्रीशन में रहता है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम का बहुत ही कम रोल है सिक्रीशन में। द मेन रोल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। सिंपल एपिथेलियम में एक सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज होते थे, वेयर एज इन कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। Just like simple epithelium, it is also of three types. First one is the compound squamous epithelium, second compound cuboidal epithelium, and third is compound columnar epithelium. Compound squamous epithelium में cells की जो upper most layer है वो flat होगी, और compound cuboidal epithelium में ये layer cube like, and the compound columnar epithelium the uppermost layer is column like. Now discussing it one by one. First one we have is compound squamous epithelium. We can also say it as stratified squamous epithelium. It is differentiated into two types. First one is the keratinized stratified squamous epithelium, and the second one is the non-keratinized stratified squamous epithelium. पहले keratinized stratified squamous epithelium के बारे में हम जानते हैं। As the name suggesting keratinized, it means इसमें केराटिन की डिपोजिशन होगी और ये होती है अपर मोस्ट लेयर में। ड्यू टू दिस डिपोजिशन द अपर मोस्ट लेयर बिकम्स डेड, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, एंड दिस इज सीन इन द स्किन एपिडर्मिस. So the example of keratinized stratified squamous epithelium is the skin epidermis. Due to the deposition of keratin, this layer becomes the waterproof and having the dry surface. Next one is the non-keratinized stratified squamous epithelium. इसमें हमारे पास केराटिन की डिपोजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी अपर मोस्ट लेयर बाकी लेयर्स की तरह ही लिविंग रहेगी. This epithelium helps in the water and mucus secretion. So it keeps the surface moist or wet. And we know हमारी बॉडी में moist और wet surfaces कहाँ कहाँ present हैं. Wet surfaces are present in buccal cavity, vagina, cervix, oesophagus, pharynx, cornea of eyes and inner surface of our eyelid. This is about types of compound squamous epithelium. Now talking about the location of compound cuboidal epithelium. This is present in the duct of larger glands like adult sweat glands, pancreas and salivary duct. And the example of compound columnar epithelium is the male urethra. Next type of epithelium is pseudostratified epithelium. Pseudostratified means not truly stratified. बेसिकली इट इज सिंगल लेयर्ड, लेकिन इसके कुछ बेस के सेल्स जो हैं वो एपेक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी लेयर दिखाई देती है. वी कैन ऑल्सो से कि अल्टरनेट कॉल्यूमनर एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. In human body, pseudostratified epithelium is present in eustachian tube, bronchi, trachea, in upper respiratory tract, and in vas deferens and epididymis of male reproductive system. This is about pseudostratified epithelium, and examples are important. The last type of epithelial tissue is transitional epithelium. This epithelium is also known as urothelium because it is confined to the urinary system. Transitional epithelium is also multi-layered and present in 4 to 6 layers. It resembles the non-keratinized
stratified squamous epithelium. Only difference is that in transitional epithelium, the uppermost layer is rounded and large. And the most important part is that this epithelium do not rest upon the basement membrane, just like other epithelial tissues. It lies directly on the underlying connective tissue or the muscular tissue. This layer is highly stretchable. Urothelium is found in renal pelvis, urinary bladder, ureter and urethra. इसके जो highly stretchable cells हैं that allows urinary bladder to expand and hold more and more urine. Reason being that these cells are rounded when the organ is empty, that is when the bladder is empty, and get flattens when bladder fill with the urine. So provide more area to the bladder for the urine holding. इसी रीजन से हम अपने यूरिन को लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे. If you like the video, subscribe the channel for more such content. My name is Anna Sharma and thanks for watching.